Good evening, children. The main concern behind this chapter is that you people should be aware that what are elections and what is the need of elections. With the help of this, enough part of the chapter had been deleted. So children, I am going to start the chapter elections. Now, and according to the revised syllabus, the topics which are there is meaning, composition of election commission, direct and indirect elections, general elections, midterm elections and by-elections. This is the syllabus. Now children, let's talk about that. What do you mean by elections? What is the meaning of the word election? In simple language, if I say, an election is a contest between different candidates, whether they belong to different political parties, which they generally do, or whether they stand independent for getting people's support. That thing is known as elections. Now, there can be other terms also. For example, if I talk about, now, let's know about what is the meaning of election. Now, children, in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in modern times is representative democracy. People elect their representatives who rule on their behalf. तो इलेक्शन एक तरीके का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें कई सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कई सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं विच दे जनरली डू, और वेदर दे स्टैंड इंडिपेंडेंट या फिर वो इंडिपेंडेंट मीन्स they do not belong to any political party, or it can be that any party or combination of parties which gets the support of the largest number of people. चुनाव होते हैं और जो भी पार्टी सबसे अधिक सीट्स लेके आती है, that party forms the government. देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि इस इलेक्शंस का फ़ायदा क्या है और what is the importance or what is the significance of election. So in few lines I would say elections are a characteristic feature of a modern representative democracy wherein citizens elect their leaders in free, fair and regular elections. Therefore, an election is a process by which individuals are elected for governing the country. Political parties play a very crucial role in democracy because elections are contested, won or lost on party lines. चुनाव होते हैं, लोग जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन वो सब किसी कंडीशंस पे होता है. That is on the basis of the party, or that is on the basis of the political parties or the party guidelines. Now the next point is, देखो कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं. Firstly, let's talk about what are the kinds of elections. Can anyone tell me? Yes, children, tell me. Mention kinds of elections. Nikhil, Aditi, Shubhi, Charu, Janvi, anyone? Tell me kinds of elections. How many kinds of elections are there? Shubhi Yadav, 2. Can you name them? Okay. Very right answer, Shubhi. Shubhi has given the very right answer that there are 2 kind of elections. Now, let me talk about the 2 kinds of elections. The first one is the direct election and the second one is the indirect election. Now, there are 2 kinds of elections. There are 2 kinds of elections.
first one is direct and the second one is indirect. See, what are direct elections, or what is direct election? In direct elections, voters directly elect their representatives to the legislature, while in indirect election, voter first elects a small number of electors who in turn elect members of the legislature. My next point is the MPs. MPs means your member of parliament. The members of parliament, the MLAs, and members of the local bodies are elected by the method of direct elections. Okay, or you can say direct elections. We can see the example in Vidhan Sabha and Lok Sabha. Vidhan Sabha is also known by the name of Legislative Assembly, and the Lok Sabha is known by the name of Lower House of the Parliament. Okay. However, the members of the Rajya Sabha, the President and the Vice President of India, तीनों लोग, President, Vice President and the members of the Rajya Sabha, or you can say Vidhan Parishad, are selected through indirect. अगर हम लोग बात करें कि President, Vice President of India कैसे select होते हैं, these are, and also the members of the Vidhan Parishad in a state are selected by the method of indirect elections. देखो, जैसे कुछ फायदे होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के, कुछ फायदे हैं, कुछ इनडायरेक्ट के फायदे हैं. बस मैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है. द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू से इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट यू शुड बी नोइंग. सो देखो, दोनों मेरिट्स के, दोनों मेथड्स के, दोनों काइंड्स के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने लॉसेस हैं. अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट इलेक्शन का क्या बेनिफिट है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, द मोस्ट एंड द फर्स्ट merit of direct election is, it is said that the method of direct elections is most democratic as it enables the electorate to take part in constituting the government directly. इसका मतलब हुआ कि इसमें जो जनता है उसको सीधा मौका मिलता है, वो खुद डायरेक्ट तरीके से जाके अपनी पसंद या अपनी नापसंद को बैलेट बॉक्स में उतार सकती है. अच्छा, और दूसरा फायदा देखो क्या है इसमें, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, दिस सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस मेक्स द रिप्रेजेंटेटिव मोर रिस्पॉन्सिबल. अब जस्ट थिंक कि अगर हम लोग के पास वोट डालने का राइट ना हो, अगर हम लोग को वोट डालना ही ना हो, तो हमें क्या मतलब रहेगा. वी आर नॉट कंसर्न विद पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो इससे लोगों का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वोटर्स का, वो ख़त्म हो जाएगा. The system of direct elections stimulates political interest among the voters. Yes, children, any doubt in this? Any doubt in this, children? To anyone? Okay. Now let's talk about, देखो कुछ फ़ायदे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के, कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसा कि जो सिस्टम होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, इट इज़ सेड टू बी फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉपुलर पैशन. इट ट्रांसफर्स द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मासेस इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू सेलेक्टेड पर्सन्स हु आर लाइकली टू बी लेस स्वेड बाय पॉलिटिकल पैशंस. और एक चीज़ और है बेटा, दूसरा इसमें जो दूसरा मेरिट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, वो है दैट द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस सेव्स अस फ्रॉम सच डेंजर्स विच कैन रिजल्ट फ्रॉम हेस्ट. इट हैज़ बीन, हम लोग कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम, हेस्ट मेक्स वेस्ट. देखो इस सिस्टम में क्या होता है, देयर आर टू इलेक्शंस. As such mistakes made at one stage can be corrected at another stage. मतलब एक बार आपसे कोई गलती हो गई, तो जब दूसरी बार आप वोट डालते हैं तो यू कैन चेंज इट ऑल्सो. जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारी फर्स्ट चॉइस होती है, जो मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं उनको फर्स्ट चॉइस होती है, सेकंड चॉइस होती है. तो आपने एक बार गलती करी तो आप दोबारा उसको करेक्शन कर सकते हैं. लेकिन जो हम लोग के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है.
वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन इन द डायरेक्ट इलेक्शंस। आपने एक बार बटन पे हाथ रख दिया, प्रेस कर दिया, तो दैट इज वैलिड। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। whether you are ready with that or not, once you have pressed the button, your powers are over. ओके, ये हम लोग का पॉइंट हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, देखो राज्यसभा जो हमारा होता है, राज्यसभा में टोटल सीट्स होती है 250, लेकिन इसमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट, और जो 12 होते हैं, जो रिमेनिंग 12, दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्पेसिफिक फील्ड्स, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे दे कैन बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वो साइंस के हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इलेक्शन जब प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का होता है, तो इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, देखो इलेक्शंस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ये इनडायरेक्टली होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? रिमेंबर द टर्म, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पॉइंट याद रखना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर देयर। दूसरी तरफ वही अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, मीन्स द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है। इन ईच एंड एवरी स्टेट वी आर नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद, so that's why this method has been applied. Now let's move to the other point. My other point is, अब ये इलेक्शन कमीशन जो होता है, इस इलेक्शन कमीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? What are the things? इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं। Let's talk about इलेक्शन कमीशन। देखो, जो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है, the responsibility of having the elections or holding the elections, that goes in the hands of election commission, वो election commission के हाथ में होती है। The election commission is totally fully responsible for any kind of elections. Any kind means your the central, the state or the other. See, to ensure free and fair elections in the country, there is a special organization known as the election commission, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? By the name of election commission. The election commission consists, अब इस election commission में कौन कौन होते हैं? See, the first one is CEC, Chief Election Commissioner. इसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, that is one and only Chief Election Commissioner, and this is appointed by the President. This is appointed by the President. और जो इनका ड्यूरेशन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज ऑफ 6 years. ध्यान रखना इस पॉइंट को। गवर्नमेंट हम लोग की होती है 5 सालों के लिए, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दैट पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 years. Along with the chief election commissioner, 2 other commissioners are also appointed by the President. After that, देखो इसके अलावा the number of other commissioners अगर बढ़ते हैं, if they are being increased, बढ़ाए भी जा सकते हैं, and these numbers are fixed from time to time by the president. जैसे मान लो एक ही समय में कई राज्यों में at one time only we are having elections in several states, so at the time the number of election commissioners can be extended, can be increased, but it all would be done by the president himself. See, the next point is the chief election commissioner acts as the chairman. The CEC,
शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज he acts as a chairman of the election commission. याद रखना पॉइंट, कंफ्यूजन हो सकता है. If I ask you who is the head of the election commission, you will say, sir, the chief election commissioner, he is the chairman. अगर क्वेश्चन आ जाए who is the chairman of the election commission, you will give the answer chief election commissioner. And at present, Mr. Sunil Arora, remember the name, Mr. Sunil Arora is the chairman of the election commission of India. देखो इसमें जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, all the appointments are done by the president, but remember children, सारे अपॉइंटमेंट्स करता तो प्रेसिडेंट है, but they are being done on the approval of the parliament. याद रखना, करता सब कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी परमिशन से, बाय द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट. Now children, one question I am asking, what is the salary? What is the salary of CEC? Can anyone tell me? The name is on your screen also children, Sunil Arora. Now tell me, what is the salary of the CEC? Yes, just guess the salary. What can be the salary of the chief election commissioner? Anyone? Shubhi, Nikhil, Charu, Janvi. Okay. The salary of the chief election commissioner of India is 2.5 lakh. The salary is 2.5 lakhs per month. Yes, Charu, it is equal to the salary of a Supreme Court judge, and at present the salary is 2.5 lakhs per month. And this person hold the post. The chief election commissioner can hold the post up to 65 years of age. 65 साल पे इनका रिटायरमेंट होता है. Okay, the president or the government of a state, when so requested by the election commission, can provide him with regional election commissioners or regional commissioners to assist him in performing his duties. In the same manner, other staff can be made available to him and the regional commissioners. देखो जब भी चुनाव होता है तो जो इलेक्शन कमीशन की जो पूरी टीम है वो काफ़ी कम है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस भी स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ये लोग यूज़ करते हैं. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. वही लोग इलेक्शन में उनकी ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं. सो इट कैन बी डन. और इलेक्शन कमीशन की जो पूरी टीम है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. जैसे यूपी में इलेक्शन है, लखनऊ में इलेक्शन है, तो हमारे जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, जो रीजनल कमिश्नर होते हैं, they can be increased also. Now, the chief election commissioner can be removed from his office only on the same ground as the judge of the Supreme Court. मतलब सिर्फ हटाने का एक तरीका होता है, and that pattern is known as the impeachment. जैसे हम लोग अपने प्रेसिडेंट को हटाते हैं, in the same manner the chief election commissioner can also be removed from his post. The conditions of his service cannot be changed after his appointment to his disadvantage. अच्छा, जैसे कंडीशंस आपको बताइए कि आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, इतनी सैलरी, ये सब ठीक है. अगर आपका अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट होने के बाद ये चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं.
These changes cannot be done after your appointment has been made. Children, this is clear? ओके, अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट में. माय नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस की. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शंस. व्हाट आर इलेक्शंस? अब हम लोग बात करते हैं कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं. टोटल देयर आर 3 kinds of elections. One is the general election, the other is the midterm election, and the third one is by-elections. 3 types of elections are there: general, midterm, and by-elections. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं general elections की. What are these general elections? There are some differences between general elections, midterm elections and by-elections, which must be understood carefully. इसको बहुत ध्यान से समझना. देखो general elections क्या होते हैं. The regular elections which are held for the formation of Lok Sabha or state assemblies after every 5 years are called the general elections. वो चुनाव जो हर 5 साल पे होते हैं, जो कि हमारे लोकसभा में या स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा में होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शंस. अच्छा, आखिरी जनरल इलेक्शन कब हुआ था? कैन एनीवन टेल मी when did the last general elections took place? Yes children, anyone can give me the answer? When did the last general elections took place? Charu, Nikhil, Janvi, just answer this question. Shubhi, when did the last general elections took place? Answer it fast. I am waiting for your response. Type it fast, children. Okay, now I am telling you the answer. The last general elections took place. Yes, Charu, your answer is right. That is 2019. I'm talking about Shubhi. I'm talking about the Lok Sabha. Okay, very good, Charu. Your answer is right. Now let's talk about that. After every 5 years, the general elections take place. Now my second point is mid-term elections. What are mid-term elections? Mid-term elections are the elections which are held before the completion of the term of 5 years, when the legislature is dissolved due to one reason or the other. Such kind of elections are held when the central government or the state government fails to prove its majority in the legislature, and elections are held for the new government. The newly formed legislature will have full 5 years term. अब इसका मतलब समझो बेटा. जैसे गवर्नमेंट हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं, दैट इज फॉर 5 years, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है. लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न अगर गवर्नमेंट जो सरकार है बीच में अगर टूट जाती है, अगर गवर्नमेंट बीच में टूट जाती है या बीच में अगर गवर्नमेंट अपना समय पूरा नहीं कर पाती है, तो गवर्नमेंट वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है एंड न्यू इलेक्शंस टेक प्लेस. 5 साल से पहले अगर अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो नए इलेक्शंस होते हैं. उस इलेक्शंस को मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं या मध्य वर्गीय चुनाव. मिड टर्म इलेक्शंस, मिड का क्या होता है मतलब बीच में, टर्म
टर्म होती है 5 years की, और अगर बीच में गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो दैट इज नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस। अच्छा, अब मिड टर्म इलेक्शंस हुए और जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, दैट पार्टी इज गोइंग टू रन फॉर कंप्लीट 5 years। जो बचा हुआ टेन्योर है, मतलब 5 साल का, वो पूरा। ये नहीं कि गवर्नमेंट दो साल में डिसॉल्व हुई थी तो वो बचे हुए खाली 3 साल रूल करेगी, नहीं, इट्स नॉट सो। इट इज दैट आफ्टर नई गवर्नमेंट बनी तो फिर पूरे 5 साल वो रूल करेगी। The newly formed legislature will have full 5 years term. Now let's move to the third point, that is by elections. अब ये by elections क्या होते हैं? By election means the process of conducting elections to fill the vacancy in the parliament or in the state legislature because of the resignation or death of a member during his term of office. It is called by election. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नेता सेलेक्ट होते हैं तो आपका टेन्योर कितना है, 5 साल का, लेकिन बीच में 5 साल, मतलब 5 साल के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन 2 साल बाद ही आप रिज़ाइन कर देते हैं या आपकी डेथ हो जाती है। इफ़ द मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट और इफ़ ही गिव्स और इफ़ ही डाइज, दोनों कंडीशंस में वो सिर्फ एक सीट खाली हो गई, मतलब जहाँ का भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मिनिस्टर था वो सीट खाली हो गई। सो फॉर दिस व्हाट ही हैज़ टू डू, ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन, और इफ़ ही हैज़ डाइड देन फॉर दैट पर्टिकुलर सीट, सिर्फ उसी सीट के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बाय इलेक्शंस विल टेक प्लेस, वहाँ पे चुनाव कराया जाएगा, और उस इलेक्शन को हम कहते हैं बाय इलेक्शन। जैसे अभी हमारे यूपी के ऑनरेबल मिनिस्टर्स की डेथ हुई है, नियरली 3-4 मिनिस्टर्स हैव डाइड ड्यू टू कोरोना, फॉर एग्जांपल चेतन चौहान, तो उनकी एक सीट जो खाली हुई है उस सीट पे चुनाव होगा, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सीट, तो दैट इज नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस। या बीच में कोई अपना इस्तीफा दे देता है, देन ऑल्सो द मिड टर्म इलेक्शंस विल टेक प्लेस। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में? लेट्स टॉक अबाउट सी। पहले मैं डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करता हूँ। वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वही इनडायरेक्ट इलेक्शंस में वोटर्स डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स or head of the state. They elect only an intermediary body, a electoral college. Second point है बेटा, law regulates the qualifications. देखो डायरेक्ट इलेक्शंस में आपकी क्वालिफिकेशन होती है, एज होती है, एक्सेट्रा, of voters and establishes eligibility requirements for contestants. एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वही all elected representatives are treated at par. They are no further qualifications. Shubhi, the difference between midterm elections and by-election is midterm election में पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. In midterm election the entire government changes, whereas in by-election only one minister change. सिर्फ एक मिनिस्टर चेंज होता है. That is the difference. Now the next point, law हम लोग का थर्ड पॉइंट है, every adult citizen holds the right to vote. वहाँ पे every elected representative holds the right to vote. Fourth point is there is a large body of voters called the electorate. जो पूरे हम लोग वोटर्स होते हैं इसको कहते हैं हम लोग इलेक्टोरेट. अच्छा, वहीं पे डायरेक्ट इलेक्शंस में there is a very big electorate, whereas in indirect elections there is a small body of voters. After this, members of legislative assemblies
and members of the Lok Sabha are directly elected. दो examples हैं, MLAs, members of the Legislative Assembly, or the members of the Lok Sabha. Both these are directly elected. दूसरा example indirect का, members of the state legislative councils, members of the Rajya Sabha, president and vice president of India are elected indirectly. इन सब का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है. I hope so, children. These points are clear to you. Respond it. These points are clear to you, what I have taught you today. I hope so that all the children would have been able to understand whatever the topics have been taught to you. So now let's move to the questions. अब थोड़े हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं. The questions would be visible on your screen soon. Okay, children. My first question is, who appoints the CEC of India? You people can type your answers fast. Who appoints the CEC of India, Chief Election Commissioner? Okay, Charu, your answer is right. Okay, Charu, your answer is correct. Now let's move to the other question. What do you mean by an election? Election का क्या मतलब होता है? What is the definition of an election? Yes, Shubhi, your answer is right. Okay, yes, only Shubhi sent me the answer. Now, the exact definition of election is
Yes, Charu, Nikhil, other people send your answers fast. Janvi, send your answers fast. Now, if you say I am telling you the answer now, the answer is the process through which people elect their representatives through casting their votes in an union, in an office, in a state, or in a country is called an election. Again, I am repeating my answer. Listen it carefully. Okay, right answer Charu. But in normal words, the process through which people elect their representatives through casting their votes in an union, in an office, in a state, or in a country is called an election. Okay, now the next question. My next question is, what is meant by direct elections? Give the answer of this question. What is meant by direct elections? Okay, the answer is, what is meant by direct election? This answer is, direct election is the one in which the voters directly choose their representatives to the legislatures. That is known as direct elections. Now the next question. The next question is, what is indirect election? The next question is, what do you mean by indirect election? Okay. Now the other question, what is meant by indirect election? What is indirect election? Yes, Charu, Shubhi, Janvi, Nikhil, type fast the answer. Others also send you answers. Okay, now children, I am telling you the answer for this question. What is meant by indirect election? See, an indirect election is one in which the voters do not directly elect their representative but elect an intermediate body which finally proceeds to elect the representative. Now, Shubhi, your answer is right, but only certain words you have to use.
Okay. Now children, the next question. Mention one advantage of direct election. One advantage of direct election. Yes, Charu, type it fast. One advantage of direct election. See, direct election stimulates the interest of the people in elections. Direct election stimulates the interest of the people in elections. Now, the other question, bit difficult question. What is representative democracy? My question is, what is representative democracy? Okay, answer this question now. What is representative democracy? Answer it fast, children. This is the last question for today, and tomorrow we will be having an open session, and in the coming week you will be having the test, subjective test of the chapter elections. Okay. Now the answer for representative democracy. Okay, no responses coming from your side, so let me give the answer. Direct democracy is not possible everywhere and all the time. So at district, state or national level, people elect their representatives to voice their grievances and get them redressed. This is called representative democracy. Okay, children. So that is only for today. That's all for today. Remember the definition of representative democracy. The answer is direct democracy is not possible everywhere and all the time. So at district, state or national level, people elect their representatives to voice their grievances and get them redressed. This is called representative or indirect democracy. So be ready for tomorrow's class.